Exercise 6.5, 13th question. D and E are the points on sides CA and CB, respectively of a triangle ABC, right triangle, a right angle at C. Right angle triangle. D and E are the points on sides CA. D is a point on side TA and E is a point on side BC. Okay? Respectively. I'm asking to you to prove AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. This is the thing. It's not more difficult to you. And whenever this is the thing given to you, ABC is a right angle triangle, right angle at C, and D and E are the points on BCA and CB. CA, CB में points हैं. And we need to prove this one, AE square. And whenever AE square is there, you have to write here join AE and BD. ये दोनों join करो. A to E join करो, construction, and B to D join करो. How many rectangle triangles are forming here with this? Huh? 4 I'm saying. With this, if I join this, then 4 right angle triangles. One is ABC, and another one is ACE, another one is BCD, another one is CDE. These 4 right angle triangles. And what is asking to us to concentrate first of all? First of all, this is asking to us. So AE square किधर आएगा? ये है AE square. So AE square चाहिए. So AE square चाहिए तो AE square किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? उस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. By Pythagoras theorem, in triangle ACE, AE square is equals to AC square plus CE square. बाहर लेके आओ. ट्रायंगल क्या है? ऐसा है, ये है ACE. समझ में आ रहा है ना? So that is. And in triangle another one, BD square. So BD किधर आ रहा है? ये triangle BCD. In triangle BCD, BD square is equals to, Krishan, BD square equal to, in triangle BCD, Pythagoras theorem apply. No. Because simple Pythagoras theorem apply करना है. Pythagoras theorem apply करना है is nothing but this one. ये BCD. In this hypotenuse किधर है? Pythagoras theorem क्या है? Hypotenuse square equal to sum of the squares of other two sides. Isn't it? Pythagoras theorem says to you that hypotenuse square. Hypotenuse क्या है इसमें? BD. BD square equal to what do you get? I am asking. Who will take? Wait. Raise your hand. Who will take? बाकी सबको किसको पता नहीं. Swam. Square plus BC square. Square of this one plus square of this one. So what do you get here? BC square plus CD square. Okay. In triangle AB square दे दिया. तो AB किधर है? AB ये है. ये पूरा ट्रायंगल में है. तो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में AB square is equals to AC square plus BC square. Isn't it? And in triangle DCE, DE है इधर, and join DE also नहीं. So DE चाहिए आपको. DE square is equals to, DE square is equals to
CE square plus CD square. Now A1 मान लो, A2 मान लो, this is 3, this is 4. So 1 plus 2 कर. What do you get here? 1 plus 2 implies we are going to get AE square plus BD square is equals to AE square is equals to AC square plus CE square plus BC square plus CD square. Just I am interchanging the terms because we are having AC square plus BC square together here. तो AC square को BC square को together लिखता हूँ. AC square plus BC square plus CE square plus CD square. ये दोनों places change कर लिया. Commutative property apply कर. We call it as a commutative property. Commutative property को apply कर. Now this is equals to what from 3? This is equals to what from 4? D square. In the brackets you write from 3 and 4. This is the correct way of proving. Very simple proof. Just Pythagoras theorem only we are applying everywhere. In 4 triangles, 4 different triangles. That's why I asked you that how many right angle triangles are forming in this figure. Okay? समझ में आया ना? Let us move to the next question. Vishmita, any doubt? Four directly adding का जरूरत क्या है? If you add 1 and 2 and 3 and 4, because we need to prove this one. If you add all 4 equations, what do you get? What is required to us to prove that you have to keep in your mind. हमको क्या prove करना है वो दिमाग में रखना है ना. It is asking to you this one is equals to this one. तो हमको ये दोनों चाहिए तो ये दोनों ऐड करो. ये दोनों चाहिए तो ये दोनों को ऐड करो सेपरेटली. आपको राइट हैंड साइड बोथ इक्वल है, सेम आएगा. 1 plus 2 करो, 4 sums we are going to get. 3 plus 4 करो, 4 squares sum we are going to get, and that is both are same we are going to. Like that also we can do it. But I have taken the 1 and 2 and rearranged the terms and I have extracted from 3 and 4. Okay? Next. Uh, 14th question here. The perpendicular from A. So, perpendicular from A on BC of triangle ABC intersects the BC at D such that DB is equals to 3 times of CD. See the figure 6.5. So here it is, the figure is given to you. If the figure is not given also, you should be in a position to draw it. Okay. Here it is given A, B, C. Perpendicular from A onto the BC. AB is perpendicular to BC such that DB is equal to 3 times of CD. DB is equals to 3 times of CD. This is equal to 3 times of this one. Okay. Is it clear to you? Question is given to you that one. So now asking to you to prove. What is to prove this? Always you have to keep in your mind. To prove 2 times of AB square is equals to AC square plus 2 times of AC square plus PC square. Okay. This is required to us to prove. So what is given? Let us write here. Given AD is perpendicular to BC. Given that AD is perpendicular to BC. Okay. So now here and right angle triangles we are getting. Keep in your mind and also given that DB is equals to 3 times of CD. Okay. And here whenever you are taking DB is equals to 3 times of CD. BC is equal to how many times of CD? DC is equal to how many times of CD? CD. Yeah. 4 times.
ये एक पार्ट है, ये 3 पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट्स है. BC is the 4 parts. That also you keep in your mind because BC is here, it is given. Very clear. 2 times of AB square हमको चाहिए. ये AB है, ये भी स्क्वायर चाहिए. तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. बट इन दैट वी आर गोइंग टू गेट AD स्क्वायर आएगा. बट हमको AD स्क्वायर नहीं चाहिए. हमारा सोच कैसे होना है मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू थिंक लाइक दिस टू एक्सट्रैक्ट द आंसर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सोच ऐसा होना है. AD स्क्वायर आएगा, BD स्क्वायर आएगा. BD भी नहीं होना है, बट BD कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ BC, because BD can be written as in terms of BC, because I told to you that BC equal to 4 times of CD. BC equal to 4 times of. So you can write this one in terms of BC. BC की जैसा लिख सकते हैं, और this one also in terms of BC. No, AD नहीं चाहिए, but we need AC. So what to do here? Here you are going to get the 2 right angle triangles. In that 2 right angle triangles, first write the Pythagoras theorem. Why? And ये भी लिख दो. DB is equal to 3 times of CD. BC is equals to BD plus CD. ओके, और DB लिखो, इधर DB लिख दिया ना, कंफ्यूजन अवॉइड कर. DB plus CD. So we want this one also to express in terms of BC, this one also to express in terms of BC. Okay, first let us write DB is equal to 3 times of CD, means 4 times of CD. BC is equals to, this implies CD is equals to BC by 4. ये इधर तक हो गया. बट वी विल राइट CD को BC में लिख दिया, बट DB को भी BC में लिखना है. हाउ? BC is equals to DB plus CD. ये CD को BD में लिखो. CD equal to 1/3 of DB. Isn't it? Are you getting? DB plus 1 by DB by 3 from 1. इधर से समझ में आया? What I am doing? I am making this part in terms of BC, this part in terms of BC, and ready. Okay? खाना बनाने से पहले मसाला रेडी करते हैं ना, ये मसाला रेडी कर रहा हूँ मैं. बिरयानी बनाने के लिए मसाला रेडी करना, बिकॉज विच आर नीडेड टू अस, हम रेडी करके रख रहे हैं. फटाफट उसके बाद वो यूज करते जाए. समझ में आ रहा है ना? सो विच इज इक्वल्स टू DB, LCM करो 3 times of DB plus DB, which is equals to 4 times of DB by 3, which is BC. So I want DB in terms of, so DB is equals to 3 times of BC by 4. This is needed to us, this is needed to us. These two will be useful to us, because now by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem in triangle ADB में. ओके, पहले ADB से ACD में कर, ACD में अप्लाई कर. व्हाट डू यू गेट हियर? AC square is equals to AD square plus CD square. AD square is equals to AC square minus CD square. इसको 2 मान. Why? We need 2 times of AB square. तो ये ट्रायंगल में AB स्क्वायर ले लिया तो AD आ जाएगा. वो AD को इधर से रिप्लेस करता है. समझ में आ रहा है? नाउ इन ट्रायंगल ADB, AB square is equals to AD square plus DB square. ओके, ये AD इधर से रिप्लेस कर, which is equals to AC square minus CD square plus DB square from 2.
हमको क्या आया, AC आया, राइट हैंड साइड में AC, 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर चाहिए, बट 2 बाद में कंसिडर कर, अभी नहीं। ओके, तो AC स्क्वायर है, CD आया, BD आया, DB आया, तो CD यू कैन रिप्लेस बाय BC, DB यू कैन रिप्लेस बाय BC, बिकॉज वी नीड राइट हैंड साइड में BC है, ये दोनों टर्म नहीं है, CD DB नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड मसाला। समझ में आ रहा है ना? Okay, so now what you have to write here, which is equals to AC square minus CD का प्लेस में BC by 2, BC by 4 whole square, plus here 3 times of BC by 4 whole square. Now what is required to us, only that terminology only there na, that lines only there na, AB चाहिए, AC चाहिए, BC चाहिए, AB AC BC, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ऑटोमेटिकली आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। Let us see that. How do we simplify AC square minus BC square by 16 plus 9BC square by 16? LCM करो 16. 16 AC square minus BC square plus 9BC square, which is equals to 16 AC square minus 8BC square by 16. 8 common ले, oh sorry plus 2 AC square plus, sorry 2 AC square plus BC square by 16. 8 1 सा 8 2 सा, this is what here, A B square, ये 2 को इधर लेके आओ, 2 times of AB square is equals to 2 times of AC square plus BC square. This is required to us. समझ में आ रहा है ना? पहले मसाला प्रिपेयर कर लिया, इसके लिए बिरयानी अच्छा बन गया। हाँ, नहीं है तो क्या है ना, गड़बड़ हो जाते हैं। हमको क्या चाहिए, whatever it is needed to us, that we need to थोड़ा सा सोचना, हमको क्या चाहिए, क्या प्रूव करना, whatever it is available from the figure only you need to analyze. Did you understand? Did you understand बेटा? Online students, ऑफलाइन वाले तो ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. And 15th question, 15th one also little bit mostly like this only will be there. 15th question also. Okay, next 15th. Yes, yes. 15th one is, in an equilateral triangle ABC, D is a point on BC such that DD is equals to 1 by 3 BC. So what is given here? ABC is a right angle. So what is to prove here? Let us write here. 9AD square is equals to 7AB square. And given that in an equilateral triangle ABC, D is a point on BC such that BD is equals to 1 by 3 of BC. BD is equals to, given triangle ABC is equilateral and BD is equals to 1 by 3 of BC. That's what, no? Yes. So BD is equal to 1 by 3 of BC. So D will be a point where it will be near to B or near to C. ये भी ध्यान में रखना है, आप फिगर में नहीं दिया है, फिगर ही नहीं दिया. D is a point on BC such that BD is equals to 1 by 3 of BC.
तो ये डी इधर होगा और इधर होगा, नियर टू बी और नियर टू सी। इधर ले लिया सपोज 1/3 BC, ये 1/3 पार्ट, 3 पार्ट्स ये है, सही होगा। थ्री टाइम्स ऑफ BD इज इक्वल्स टू BC। BD 3 टाइम्स ले लिया तो BC होगा, होगा नहीं होगा, बिकॉज ये बड़ा है ना, इतना लेंथ 3 टाइम्स ले ले तो उधर तक जाएगा C पॉइंट, तो ये गलत है, इधर नहीं होगा। तो we need to take the point here D. Okay, so join AD and draw AE perpendicular to BC, because here to here join करो and from here to here perpendicular line एक draw करो, AE perpendicular to BC. Now asking to prove that AD square. AD square is asked. So now let us see here how do we see. ये AD चाहिए हमको, पिछले प्रॉब्लम की जैसे सेम मॉडल, ये डी स्क्वायर चाहिए, ये ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर आएगा, ए ई स्क्वायर। हमको क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, सिर्फ ए बी चाहिए, ए बी इज नथिंग बट यू मे हैव द बी सी, यू मे हैव द ए सी, because AB, BC, AC all are equal, because equilateral right hand side में you can have AB, BC, AC. So ये सारा चीजें को लेके आना है। तो ये डी स्क्वायर सपोज ले लिया है हम लोग इन दिस ट्रायंगल, ओके, ये ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर आएगा, ओके, ए ई स्क्वायर नहीं होना है, ये ई स्क्वायर रिप्लेस करना है तो ये ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है। व्हाट डू वी अप्लाई, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए सी आ गया बट ई सी भी नहीं होना है, ई सी विल बी हाफ ऑफ द बी सी, तो ई सी का प्लेस में बी सी रिप्लेस कर सकते हैं, वो हो गया। तो ये भी बी सी ए सी वही होना है, और एक्स्ट्रा हम क्या है, डी नहीं चाहिए। डी हाउ डू वी राइट, डी कैन बी रिटन एज डी माइनस बी डी, डी माइनस बी डी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बीई, बीई इज द हाफ ऑफ बी, वो हो गया, बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी, वो भी बी सी में हो गया, तो सारा चीजें फिर बी सी हो गया, बी सी एंड ए सी हो गया, सो वी कैन गेट इट। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स, हमको क्या चाहिए, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ये दोनों में। सो फर्स्ट लेट अस राइट दैट बाय Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem in triangle AEC, ये हम यूज करते हैं बिकॉज इधर AC square is equals to AE square plus EC square, isn't it? AC square is equals to AE square plus, but we need AE square, AE square use होगा, तो we will write AE square is equals to AC square minus EC square, इसको 1 मान, इन ट्रायंगल ये डी ई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, हमको ए डी स्क्वायर चाहिए ना, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ना ये ए ई स्क्वायर इधर से रिप्लेस करो, ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर प्लस डी ई कैन बी रिटन एज बी ई माइनस बी डी, BE minus BD whole square. Okay. Now here, as it is a right angle triangle, first only better we write here. It is equilateral triangle, है ना? When you draw the AD perpendicular to BC, AE perpendicular to BC कर दिया तो we are going to get it by BE is equals to EC is equals to BC by 2, है ना? Why? When you draw the perpendicular line,
these two triangles will be congruent by RHS congruence. That point also better you mentioned. From that only this part equal to this one आएगा. दोनों equal है और दोनों half of the BC. Because we are going to replace the BE with BC by 2 and this EC also BC by 2. Replace करते हैं ना. So that we are going to replace it here, which is equals to AC square minus EC is nothing but BC by 2. BC by 2 whole square plus BE is nothing but BC. BC by 2 minus BD is nothing but BC by 3. BC by 3 whole square. बस हो गया ना. AD, AC, BC, BC, BC. इसको simplify कर. So what do we are going to get here? AD square is equals to AC square minus BC square by 4 plus LCM कर लिया तो 6 आ जाएगा. 3BC minus 2BC whole square. Okay, replace all the AC BC with the AB. AB से replace करो. AB square minus AB square by 4 plus 3 times of BC, 3 times 2 times of BC. 1 time BC हो जाएगा. तो BC को मैं AB लिख रहा हूँ. AB square किधर से आया? हाँ? भाई हमको प्रूफ में AB स्क्वायर दिए ना. AB स्क्वायर लाने के लिए ये सब कुछ हम लोग कर लिया है ना. समझ में आ रहा है ना. Here actually BC we are going to get. BC also you replace by the AB. Is it clear? Now what do you get here? AB square minus AB square by 4 plus AB square by 36. LCM 36 हो जाए. So 36 AB square minus 4 9s 9 AB square plus 1 time AB square is equals to, है ना, 36 है ना. 36 minus 9, 36 minus 9, 20, 27 plus 1, 28. 28 AB square by 36. 4 4 7 जा 4 9 जा. ये 9 को उधर लेके जाओ. 9 AD square is equals to 7 AB square. आ गया ना. अभी सिंपल लग रहे हैं ना. हमको क्या चाहिए वो लेना है. उधर से एक्सट्रैक्ट करते एक 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 स्टेप को निकालते. इट्स नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर. प्रॉब्लम पूरा एज इट इज याद रखने के लिए सोच लिया तो भूल जाए. इसका मेन मोटो किधर है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो याद रखना है. हमको एडी स्क्वायर चाहिए. एडी स्क्वायर निकालना है. एडी स्क्वायर में ये ही आ रहा है बट ये ही नहीं चाहिए. डीई आ रहे. डीई भी नहीं चाहिए. तो एई को रिप्लेस करना है. कैसे रिप्लेस करना है? ये ट्रायंगल अप्लाई करना है. AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर. तो EC will be equal to half of BC. AC will be equal to AC means AB और DE रिप्लेस करना है. DE can be written as BE minus BD. BE is a half of the BC. BD is already given. BC में एक्सप्रेस किया है. बस everything is converted into BC. एक्चुअली प्रॉब्लम ज्यादा अलजेब्रा है इसमें. ज्योमेट्री से ज्यादा ये अलजेब्रा, ये सिंप्लीफिकेशन. Microphone is off.
16th question see here. Equilateral triangle में prove that the 3 times the square of the one side is equal to the 4 times the square of the one of its altitude. So what is required to us to prove here? An equilateral triangle, let us take it. And altitude is us. 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of the one of the its altitude. Altitude is nothing but from here I have drawn perpendicular line D. This is an equilateral triangle, it is given that. Okay, what is to prove here? To prove 3 times of one side AB, square of one side is equal to 4 times of AD square. This is required to us to prove. Okay, so now what to do here? In this same Pythagoras theorem apply karna hai. So complete steps I am not writing here, just briefly explain करता हूँ. Very simple here. AB square लेना है. ये क्या है? BD DC half of the BC. हमको we need to prove that AB square AD square होना है. तो here directly you can take it here. AB square is equals to AD square plus BD square. तो AD square कैसे लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करो. AC square minus CD square लिख सकते हैं. So I am writing AC square minus CD square plus BD square. AB square I am taking. But here whenever we are doing, whether it is right or wrong? No, it's wrong. Why? We are taking AB and we are getting everything we are converting. ये convert नहीं करना है, ये रहना है, ये BD convert कर. समझ में आ रहा है ना? This should be deleted because right hand side में AD है हमको. It is asking to prove what is required to us. Same way में नहीं जाना है. So if you are doing like this, it is wrong. Required to us to prove AD square is given and here BD square is given. So BD should be replaced with what? Half of the, okay, half of the BC curve. BC by 2 whole square. अभी what हो गया? What? ये दोनों AB है, दोनों AB equal to AD है. So you write AD square plus AB, sorry, BC square. BC square can be written as AB square. AB square by 4. LCM करो 4 आ जाएगा. 4 AD square plus AB square. ये AB square को इधर लेके आओ. 4 AB square is equals to 4 AD square plus AB square. ये AB square इधर लेके आओ. 3 AB square हो जाएगा. This is equals to 4 times of AB square. हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? What is required to us? But I am not writing the steps properly here. Here what to write? Previous की जैसा ये triangle में apply. What are the things we are applying here? We are writing that when you draw the perpendicular, ये perpendicular है. If AD is perpendicular to BC, then these two triangles are congruent by RHS, so that BD is equals to BC is equals to BC by 2. BC by 2 है. ये BD का प्लेस में BC by 2 लिख दिया. यही एक्स्ट्रा चीजें हमने कर दी. And I have used that AB is equals to BC. ये दोनों चीजें यूज कर ली. BC का प्लेस में AB रिप्लेस कर दिया. बस हो गया प्रॉब्लम. Next problem, last problem is very simple here. Just objective type of the question, 17th question, whatever it is given. Take the correct answer. In a right angle, in a triangle ABC, AB equals 6 root 3, AC equal to 12, BC equal to 6 centimeter. The angle B is asking whether it is a 17th question see here. कर सकते हैं ना? So 17th में what is given here? AB is equals to 6 root 3, BC is equals to 6, AC is equals to 12. Angle B is asking. You try angle B 90 degrees होता है तो what do we get? AC square is equals to हर एक का square करो. AB square what do you get here?
36 into 3. 36 into 3. What do you get? 100 and, sorry, 108 आएगा. And BC square क्या है? 36 आएगा. And AC square क्या है? 144 आएगा. ये दोनों का सम ये है. What do you get? AB square plus BC square is equals to AC square. So AC is the hypotenuse. So angle B is 90 degree. AC का opposite क्या है? 90 degree. B है. B is 90 degrees. Okay.